am I audible? Yes, sir. सुन रहे हैं ना? ठीक है. Because I have a bit of a change that was with respect to my Wi-Fi connection. वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, so I guess you experienced it yesterday, right, Sheikh Firoz? Yeah, sir. Yesterday it was there, but today it's perfect, sir. Yeah, yeah. No, no. We tried a new service provider, but doesn't seem to be working. Gone back to the tried and trusted old one. So, good evening, ladies, gentlemen, boys, girls. How have you been all? I guess all well. Is the weather treating you well? हमारे सुरेश नंदा जी फ्रॉम नॉर्थ बोल रहे हैं तो मस्ट बी वेरी हॉट इन द नॉर्थ पार्ट. इट्स नो डिफरेंट इन बैंगलोर, सो सब गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना तो चल रहा है. So welcome each one of you for today's session, which is some kind of continuation. जो हम लोग पिछले बार बात कर रहे थे परीक्षा के बारे में. परीक्षा खत्म होने के बाद तुरंत छुट्टियां शुरू होती है. So we are talking about vacations today. So वेकेशन एक ज़माने में कैसे हुआ करता था, हाउ इट हैज़ प्रोग्रेस्ड फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी वंस से अभी. Currently the kind of vacation people are enjoying is totally different from what we probably did in our school, college or even working days. आजकल तो इंटरनेशनल ट्रिप्स हो रहे हैं लोगों के. People are going to Singapore, US, Hong Kong, wherever. So it's different. So in one way ये भी अच्छा लगता है कि we are our country is progressing very well. विकास है, आगे बढ़ रहे हैं. सो अफोर्डेबिलिटी आ गई है. इंडियन इकोनॉमी हैज डेवलप्ड वेरी वेल. एज अ रिजल्ट वी आर एबल टू एंजॉय इंटरनेशनल वेकेशंस. तो स्कूल डेज के वेकेशंस कैसे थे? आई एम श्योर हियर मोस्ट ऑफ अस आर 60 प्लस एंड विल हैव some recalls about school time, college time, vacations, family vacations. Now, broadly, I thought I would like to say that whatever I have experienced, मैंने जो भी in 69 years of my life जो तजुर्बा है, बुजुर्ग तो नहीं बोलूँगा, बड़े ज्ञानी लोग बोले हैं कि people should have 3 vacations in a year. तो स्कूल डेज में तो हमको हुआ करता था समर वेकेशन, विंटर वेकेशन दिवाली के टाइम पे एंड एक क्रिसमस वेकेशन. 3 वेकेशंस स्कूल डेज में हुआ करता था. कॉलेज डेज में ऑल्सो रफली इट कंटिन्यूड, एटलीस्ट इन बॉम्बे. वी हैड समर वेकेशन आफ्टर एग्जाम्स, दिवाली होता था और क्रिसमस का एक छोटा हफ्ते भर का. सो दिस वॉज वेरी कॉमन. बट वॉट इज़ द क्वालिटी ऑफ दोज 3 वेकेशंस? एज चिल्ड्रन हम लोग का तो इतना था कि पढ़ाई नहीं करना है, वेकेशन में घर से बाहर रहना है, खेलना है, आउटडोर. वी वेर ऑल आउटडोर चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ अस ऑफ आवर एरा. तो बाहर जाके खेलो कूदो, सुबह जाओ. घर वॉज ओनली फॉर गोइंग एंड ईटिंग एंड कम आउट अगेन, कंटिन्यू योर प्ले गेम्स, आउटडोर गेम्स, बहुत सारे गेम्स. सो दिस यूज टू बी द वे ऑफ लाइफ. बट देर वेर ऑल्सो टाइम्स व्हेन वी यूज टू गो टू अवर नेटिव प्लेसेस. वो छुट्टी में हम लोग अपने अपने मुल्क में जाते थे. दो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, आवर रूट्स दैट इज माई पेरेंट्स केम फ्रॉम डाउन साउथ. तो कभी कदाचित वेकेशन हो जाती थी, बट वी नेवर वेंट इन समर, वी ओनली वेंट ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, बिकॉज समर में टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता था. एंड दोज डेज आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल नो व्हाट अ चैलेंज इट वॉज टू गेट अ ट्रेन टिकट. अभी तो हम लोग घर में बैठे बैठे ऑनलाइन में वी आर डूइंग ऑल द टिकटिंग. राइट फ्रॉम 1989 वी आर डूइंग कंप्यूटराइज्ड टिकट्स. Whereas those days we have, I remember parents going and sleeping overnights also at VT station to get tickets. And वो भी कभी RAC मिलेगा या वेट लिस्टेड मिलेगा, गो बैक टू VT स्टेशन, चेक अगेन क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है. So that used to be the way you go meet your relatives, friends, go to temples. This used to be the vacation then. Then as we progressed and we saw that professionally when we used to take vacation, we used to align हमारे वेकेशन. बच्चों का जो भी वेकेशन होता था उसमें हम लोग वी ट्राई टू अलाइन कि सब साथ में छुट्टी मनाएंगे, कहीं जाएंगे. तो
बॉम्बे वाले थोड़ा बहुत ओके लग्जरी जैसा लगता था कि गोवा गए, लोनावाला गए, छोटा छोटा मोटा आउटिंग, 3 nights 4 days काइंड ऑफ स्टफ। उसके बाद स्लोली स्टडीली वो 3-4 दिन के बारे में सोच के खुश रहो, बात करो, वही वही सेम थिंग वी विल कंटिन्यू टू रीलिव। देन एज आई ग्रू फर्दर मुझे पता चला कि शादी हो गए, बच्चे हो गए सब, तो देन यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड वेकेशन। अभी एट दिस एज एंड स्टेज व्हेन वी आर ऑल 60+, अभी तो छुट्टी तो है वेकेशन बोलना अलग लगता है, इट इज़ लाइक पर्याय। तो 3 types of vacation I have been having. At least I have been planning to have. 2 I always had. The third one I have recently started. So one vacation is with only your friends. You once in a way you just go meet your friends, relive with them your childhood. कोई और नहीं चाहिए. You just be with your own friends. This is one vacation, which I have been doing for the last at least 20 years. तो कुछ नहीं हो तो ये वेकेशन मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। आई विल डेफिनेटली गो आउट ऑफ स्टेशन, बैंगलोर से कहीं जहाँ, या तो बॉम्बे में मिलेंगे या इंदौर में मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे, बट वी हैव दैट वेकेशन व्हेन वी ऑल बॉयज हु ग्रो अप टुगेदर, वी मीट, वी फ्रीक आउट, वी रीलिव, उसी के बारे में बात करेंगे। एंड बचपन का खेल, जवानी का जोश जैसा है, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें, जवाबों के दिन, ये हमें याद आती थी उस टाइम पे। बट वी वर ऑल वेरी एवरेज स्टूडेंट्स, पढ़ाई में तो हम लोग को कोई दिलचस्पी नहीं थी, बट ठीक है, इट हैड टू बी डन, सो वी हैड टू डू, एंड वो करते रहे। सो दैट इज़ वन वेकेशन विच आई हैव नेवर मिस्ड एटलीस्ट फॉर द लास्ट 20+ years। एक वेकेशन है फैमिली के साथ। सो जब तक बच्चों की शादी वादी नहीं हुई थी, सो वी ऑल 4 of us गो, अगर पेरेंट्स वर अराउंड उनको भी लेके जाओ, कहीं रहो, घूमो थोड़ा बहुत बट डेफिनेटली नॉट इंटरनेशनल लेवल, वो तो नहीं हुआ। दैट हैपेंड ओनली इन 2004 फॉर अस व्हेन वी वेंट टू सिंगापुर एज ए फैमिली। तो उसके बाद तो ऑफकोर्स बच्चे लोग भी बड़े हो गए, दे हैव प्लान्ड देयर वेकेशन। सो एंड लास्ट वेकेशन, last but not the least, is you and your spouse। आप दोनों साथ में जाओ, बिताओ वक्त साथ में। दिस इज a third vacation which was never happening in my case, and very recently I have started। अभी 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले हुआ था, which only the 2 of us went to Kerala as well as Coimbatore, visited a lot of people, places, friends, temples, ये सब हुआ। सो दैट्स अ डिफरेंट डिस्कवरी व्हेन यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विथ योर स्पाउस। पहले अदरवाइज देयर इज अ टेंडेंसी फॉर बोथ ऑफ अस टू टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड, तो क्या वेकेशन रखा है, बट दिस 3 वेकेशंस एक्चुअली रीजेनोवेट करता है हमको अच्छा लगता है आगे चल के। इट कैन गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ विजन एज वेल एज प्रोस्पेक्टिव। You can see it in a different angle, कैसे होता है vacations। So these were the 3 types of vacations which I wanted to set the ball rolling। Then I would like to listen to what kind of vacations you folks have had, how did it go about, and any specific vacation that really stayed with you as long as you would continuously like to recall। ऐसे कुछ vacation जो आपके ऊपर ऐसा असर हुआ है, जो अच्छा असर है, जिसके बारे में आप सोच के अच्छा लगेगा, बार बार लुक। मे बी यू कैन राइट अ ट्रैवलॉग, ये भी करते हैं लोग, वेकेशन जाने के बाद क्या क्या किया, कहाँ गए थे वो। सो दोज थिंग्स कैन बी ऑल पार्ट ऑफ आवर एंटायर रीलिविंग प्रोसेस ऑफ आवर वेकेशन। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू सेट अप फ्रंट। उसके बाद देन आई वुड लव टू लिसन टू ऑल ऑफ यू। नीचे रिएक्शन बटन है, जस्ट यूज दैट बटन टू रेज योर हैंड्स, एंड देन वी कैन जस्ट गो ahead and how we can go about doing it। Can you please suggest a good tour organization that specializes in seniors traveling? Good point। मैंने तो कुछ अभी किया नहीं है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रिटी रिलायबल। एक यूरोप ट्रिप हमने किया था 2012 में। We went through I think Cox and Kings। It was a good experience।
अच्छा था, लेकिन इंडिया जैसा नहीं है। यूरोप यूरोप सब फालतू है अकॉर्डिंग टू मी, बट इंडिया इज नथिंग लाइक इंडिया। देयर इज सो मच टू सी इन इंडिया कि मुझे बाहर जाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। बट वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम फिरोज एंड को ऑल्सो। दे हैव ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ कनेक्ट and vacation for seniors. I'll also ask my cousin who is going to celebrate his 50th wedding anniversary and going to Kashmir. उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी पूछ के आई कैन शेयर दैट विथ यू, बिकॉज हिज 50th वेडिंग एनिवर्सरी इज ऑन 25th ऑफ दिस मंथ। तो 24 तारीख से वो निकल रहा है कश्मीर। तो मैं बात करके आपको वो भी आई विल शेयर इट विथ यू एंड और रादर विथ फिरोज फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल टू कंज्यूम। सो नैना सोम्या जी ने हाथ ऊपर किया है फर्स्ट। Others, be ready with your thoughts and ideas and what you would like to share. So unmute yourself जी and please go ahead and share. आप बताइए आपका क्या what is अभी your का बताना है कि आपको थोड़ा वॉइस स्लो आ रहा था ना मुझे। अभी का बताना है कि अभी क्या गोल है कि बचपन से लेके अभी तक में से कुछ। जो छुट्टी। अच्छा, आप लोगों को सुना ही नहीं दिया मेरी बात। मुझे बहुत लो आ रही है आपकी आवाज। Anybody else has a different view? Yes, the voice was pretty सब low. ठीक That है। is why it was not clearly audible. Oh, is that right? Okay. मैंने आवाज चैट में लिखा भी था। आवाज Okay. ठीक है। वैसे सुना पर ऐसे कुछ कुछ भी सुनाई नहीं भी दिया, ऐसा हुआ। I see. आई थॉट मेरे डिवाइस में प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, मुझे भी नहीं सुना है। अच्छा, okay, so do I repeat it or नहीं 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 सर, आप बता दीजिए किस बारे में बताना है, वो हाँ, हम फिर बोल देते हाँ, हैं। हम यही No बात need कर to रहे थे। repeat, sir. वेकेशंस, छुट्टियां जो हम लोग बिताते हैं जिंदगी में, बिताए हैं पिछले वॉट एवर नंबर ऑफ इयर्स, पास्ट का भी बचपन का भी सब पकड़ के बचपन बताना है ना। बचपन जवानी और हाँ, अभी जो अब हम फिर से बच्चे हो गए हैं उसके बारे में भी वो तो सर वेकेशन। ऐसा है कि बचपन में जब पहले का सिस्टम तो ऐसा फोन वाला था नहीं। तो अभी तो सब फोन किया, मैंने टिकट निकाला, ये हुआ। पहले बहुत पहले टिकट निकलती थी तो उसके लिए पहले स्कूल में पेरेंट्स लोग वो कंसेशन फॉर्म लेके आते थे। अब वो कंसेशन फॉर्म से हाफ टिकट लगती थी, तो पहले तो वो निकालना पड़ता था, फिर जाके वो टिकट निकलती थी। लेकिन हम लोग पहले क्या, एक ही डेट में रिजल्ट आता था, वो था 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को ही रिजल्ट आता था। तो पेरेंट्स बोलते थे उसके पहले नहीं जाएंगे, टिकट उसके बाद की ही निकलेगी, क्योंकि ज्यादा गैप भी नहीं रहता था। 15 अप्रैल तक तो एग्जाम ही चलते थे। तो फिर वो दिनों में उस समय तो कपड़े परचेज करना, और हम बहुत दिनों के लिए जाते थे तो बहुत सारे, वो पहले बेडिंग रहता था जब छोटे थे, तो वो सब प्रिपेयर करना। और पानी तो कुछ अलग ही तरीके से सुराही वगैरह लेके जाते थे। अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, बॉटल मिल जाती है, सब है। पहले खाना वाना सब मतलब अपना प्रिपेयर करके जाना पड़ता था। और हम लोग का तो 32 आवर्स का जर्नी रहती थी। कहाँ से कहाँ जाती थी आप? हम लोग रायपुर, छत्तीसगढ़ से लेके गुजरात में वो कच्छ है वहां तक जाते थे। ओके। तो उसके लिए तो बहुत प्रिपरेशन लगता था, और फिर बहुत दिनों के लिए जाते थे। फिर वहां जाने के बाद सब मौसी मामा चाचा चाची बुआ जितने भी लोग हैं, वो सबके यहाँ थोड़े 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 दिन ठहरते थे, क्योंकि वो लोग सब पास पास में रहते थे, हम लोग दूर दूर रहते थे। ओके। तो फिर उन सब से मुलाकातें, तो पहले वाले वेकेशन तो वैसे रहते थे। कभी कभार, अभी आजकल थोड़ा चलन ज्यादा हो गया है, घूमने वगैरह जाते हैं। आजकल तो साल में कई वेकेशन हो जाते हैं, लेकिन कभी आपका स्कूल फ्रेंड्स के कभी साथ। खुलता था? स्कूल कब खुलता था आपका? स्कूल हमारा 1 जुलाई ओ, तो फिक्स था। दो महीना अच्छा मिलता था आपको। 2 महीना पूरा मिलता था। तो 15 दिन पहले आ जाते थे, प्रिपरेशन वगैरह स्कूल का, थोड़ा ड्रेस यूनिफॉर्म वगैरह सब तैयार करने के लिए। लेकिन ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के लिए तो हम लोग जाते ही थे। और अभी इतने दिन आप किसी के घर में गए तो वो खुद ही नहीं रहते, हम क्या उनके घर में जाएंगे। अभी चेंज वो हो लोग गया, खुद थिंग्स हैव वेकेशन चेंज। में जाते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं था, नानी के घर पहले सब आ जाते थे, मामा मौसी के बच्चे। फिर वहां पर पूरा वेकेशन एंजॉय करने के बाद पास पास में जो लोग रहते थे उनके घर जाते थे, 2-2 4-4 दिन के लिए। तो हमारा 1.5 मंथ कहाँ जाता था पता नहीं चलता था। फिर साल भर जा ही नहीं सकते ना इतना दूर। और आजकल तो इतना सब इजी हो गया है
कि आप साल में 6 वेकेशन भी लोग कर लेते हैं, थोड़ा पास का, थोड़ा दूर का, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा हिल स्टेशन जाते हैं, थोड़ा फिर वो तीर्थ स्थान में चले जाते हैं, थोड़ा बीच में जाना है। तो आजकल पहले जैसा कहाँ रहा, पहले तो कितना प्लान करते थे और तब जाके एक वेकेशन मिलता था। हाँ अभी तो 1 वीक की छुट्टी है बच्चों को कुछ बीच में, तो तभी भी एक वेकेशन प्लान हो जाता है। हाँ, लॉन्ग वीकेंड भी होता है तो भी हो जाते हैं। हाँ, तो वो पहले नहीं होता था, लेकिन आजकल बहुत कुछ पॉसिबल है। और ये सारी चीजें भी बदल भी बहुत गई हैं, फैसिलिटी भी बहुत हो गई है। अभी तो फ्लाइट में भी सब चले जाते हैं, तो कोई इधर रिजर्वेशन नहीं मिला तो उधर से नहीं मिला तो तत्काल से, पहले तत्काल जैसा कोई सिस्टम ही नहीं रहता था। फिर वो पीछे ट्रेन में फादर वगैरह छोड़ने आते थे, तो वो टीटी के पीछे, अगर बर्थ रिजर्व नहीं है तो टीटी के पीछे घूमना, वो एक अलग ही दिन थे। RAC, वेट लिस्टेड। और अभी का वेकेशन अलग है। अभी अब क्या होता है, बच्चों को सिखाने के लिए कि बाहर क्या रहता है, जरूरतें भी बदल गई हैं। पहले इतनी मतलब नहीं थी जरूरत, अभी बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना है, सब करना है, तो उनको दुनिया दिखाने की भी जरूरत पड़ती है। फिर फ्रेंड्स लोग जाके आए, हम इधर गए, हम उधर गए, तो अपने बच्चे बोलते थे कि अरे वो जाके आए, वो देख के आए, हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे। फिर एक वेकेशन प्लान करना पड़ता है, मतलब दूसरा गया तो हमें भी वेकेशन प्लान करना है। पीयर अभी प्रेशर। अभी सब मतलब चेंज हो गया है ये सारी चीजें। मजा उसमें भी आता था, मजा इसमें भी आता है। वैकेशन तो वैकेशन है। हम मजा लोगों तो को खास मजा आता है कि हम लेडीज लोगों को बाहर कहीं घूमने गए तो उतना दिन घर के काम से है। फ्री छुटकारा। रहते, तो हमारे लिए वेकेशन का अलग ही मतलब है। सब सबका एक मायने रखता है, सो इट इज वेरी गुड। हाँ, बच्चों का अलग होगा तो हमारा अलग रहता है, पर सभी के साथ, फ्रेंड्स के साथ गए तो भी अच्छा लगता है, फैमिली के साथ गए तो भी अच्छा लगता है, किसी के रिलेटिव के घर गए तो भी अच्छा लगता है। घूमना तो बहुत अच्छा लगता है, और वेकेशन तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये इतने मेरे विचार थे। इतने साल में आपको कोई असरदार वेकेशन कौन सा लगा है, सबसे असरदार? असरदार वेकेशन में एक मतलब ये हो गया था कि जैसे रात की ट्रेन रहती है 12 बजे के बाद की, तो नेक्स्ट डे हो जाता है। हम्म। अभी जस्ट मैं शादी होके आई थी, और इन लोगों ने मतलब हस्बैंड लोगों ने पहले से कोई टिकट निकाल के रखी थी। अभी मैं यहाँ बोल रही हूँ कि अगर हम 28 को जा रहे हैं, मतलब 27 की रात के 12 बजे जाना है। ओके। नहीं, 28 को है अभी। नहीं नहीं, बहू का कोई सुनने वाला है ही नहीं। चले उस दिन सब जब ट्रेन में गए तो टिकट टीटी बोलता है उतरो नीचे, आपका ट्रेन ये निकल कल गया। की टिकट है, ये गई ट्रेन बोले। तो तब सबको लगा कि ये सही बोल रही थी, लेकिन उस समय कोई मेरी बात नहीं माना, और फिर सबको नेक्स्ट स्टेशन में उतार दिया टीटी ने। अब क्या करें जब फिर चूक टीटी गए? को बोले कि थोड़ा सा कुछ होगा तो अरेंज कर दो, अभी यही ट्रेन में अरेंज कर दो। तो पूरा टिकट फिर से दे के टीटी ने सीट्स अरेंज की, और फिर पूरा गए, क्योंकि अब वहां से वापस जाना, कुछ लोगों को वहां ड्रॉप भी होना था और कुछ लोग वापस आने वाले थे, ओह। तो ड्रॉप करने भी जा रहे थे। अब इतना ये हो गया, तो वो वैकेशन में, हालांकि मेरी कोई गलती ही नहीं थी, मैं बता दी थी, लेकिन वो लोग नेक्स्ट डे समझे, रात मतलब 12 और 5 को ट्रेन थी। अब क्या तो करें, ये दिल से। मुझे पूरा लाइफ टाइम याद रहेगा कि ऐसी गलती कभी नहीं करना। अभी भी कहीं जाना है तो ये चीज तो बहुत ध्यान से सोचना। और कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं, होता है, हमारे साथ भी हुआ है। तो वो मेरे को, बाकी तो अच्छे से ही सारे वेकेशन जहाँ गए एंजॉय किए, सबकी कोई खास बात नहीं ऐसी निकली, लेकिन ये वाला मेरा खास था कि देखो मेरी बात नहीं मानी ना। तो, बहुत अच्छा है। और उस समय ससुर वगैरह कहाँ सुनेंगे, बोलेंगे अभी ये तो लड़की है, अभी इसको क्या पता होगा। सही बात है।
थोड़ा मतलब उसने गौर भी नहीं किया, मैं एक दिन पहले बता रही हूँ तो भी थोड़ा मतलब हम लोग ये पता तो कर लेते हैं, चले अपनी तैयारी के साथ और बैठे, और फिर जो हुआ तो मुझे बहुत याद है वो वेकेशन, अच्छा। मतलब वो ट्रिप या बहुत याद है मुझे। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच नैना जी, अच्छा लगा आपकी बात सुन के। थैंक यू सर। ओके, नाउ नोबडी एल्स हैज रेज्ड हैंड, कोई हाथ ऊपर नहीं किया है, कोई बोलना चाहेगा? कैन यू? हाँ, सुरेश नंदा जी। यस सर। Can you hear me, sir? यस आई कैन। We all are नहीं, वी कांट हियर यू, अनम्यूट अनम्यूट system. अनम्यूट। हाँ, वी ऑल आर An repressive system, education system. हाँ हाँ, Can you hear me? इट्स अ लिटिल डिसजॉइंटेड, तो एक बार रिपीट करिए आप क्या बोले हो। Can you hear me now, sir? यस आई कैन हियर यू। We all are products of a repressive education system. ओके, फिर गया, फिर आपने म्यूट कर लिया आपको। हाँ, Can you hear me? यस। हाँ, हम विदेशों की चीज के बड़े we are all influenced by Switzerland, all these things. For me, I should say that my home district, Koraput district in Odisha, it's more than a Switzerland. So people should see Koraput district of Odisha and Adu Valley in Odisha and Andhra. Why people don't see that? Good point. Because we were colonial psyche. Yeah, you completely agree. Yeah. There is so much to see within Oh, India. so much in our country. Why you should visit Switzerland, Venice, and all these things? अरे We should visit our own places. डलहौजी में है एक मिनी स्विट्जरलैंड यार, we went हाँ last जी, year. डलहौजी में there is a mini Switzerland that they have created, beautiful place. I'm not able to hear you, sir, properly. Anybody else is finding problem hearing me? I said that No, I don't think so. डलहौजी में beautiful place they have created which is like a mini Switzerland, like we have छोटा कश्मीर, वैसे mini Switzerland है वहाँ पे. Yes. Why all these things here? Even you are from Karnataka. Do your siblings want to see Bhampi? I don't think so. They would see Switzerland and Venice. Bhampi is such a world-class culture. All these things. Why your siblings or all of us should sit Bhampi rather than Switzerland and Venice? That's my question. No, that is my view also, that there is so much to see within India. बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है. जरूरत नहीं है. But लेकिन हिंदुस्तान इतनी खूबसूरत है यार. पहले हिंदुस्तान को घूमो, हिंदुस्तान को परखो, उसके बाद विदेश जाओ यार. वेनिस स्विट्जरलैंड में कुछ नहीं है. स्विट्जरलैंड कुछ नहीं है. My home district, Koraput district, is more than Switzerland in Odisha. No, I also have the same view because पहले हमको अपना भारत दर्शन करना है. Absolutely. So much to see, but I mean, that is our wisdom and maturity के बाद हम बात करते हैं. Colonial psyche. Still. तो अब ऐसा है कि आपका कौन सा वेकेशन सबसे अच्छा रहा, ये बात करिए. राय तो दे दिया आपने. हाँ जी. आपका राय तो मिल गया हमको कि वी हैव टू फर्स्ट कवर आवर ओन हाउस एंड देन बाहर देखने की सोचो.
हाँ What you are मेरा saying. मेरा अपना है, मेरा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पैदा हुआ हूँ उसका खूबसूरत अभी तक मैंने देखा नहीं है। मैं क्यों बाहर जाऊं, उत्तराखंड क्यों जाऊं, शिमला क्यों जाऊं, मनाली क्यों जाऊं, पहले मेरे कोरापुट। आप फिर म्यूट हो गए। हाँ सुरेश जी, नहीं मैं हम समझ गए, आप थोड़ा भावुक हो गए हैं, बट ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है। अब आप ये बताइए, आपका कौन सा वेकेशन सही रहा है, मजा आया, और या किसी में आपको कोई प्रॉब्लम आई ऐसे, इसके बारे में भी जरा शेयर करेंगे। सुनिए, मैं 2020 में मैं मेरा होम टाउन जयपुर एंड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से बेंगलोर गया था मेरे भतीजा के साथ गाड़ी में। We went to Malkangiri, which is the Mao infested area. From Malkangiri, then you Hyderabad से ये करके बेंगलोर गए हैं। That is the most beautiful scenic beauty for my life. Scenic beauty, okay. हाँ, that's my most beautiful one. मुझे स्विट्जरलैंड में कोई ये नहीं होता। आप you traveled by train or you came by road? By road in car with my car of Samir Nanda, who lives at Bangalore. With his car, we traveled from Jaipur to Malkangiri, Malkangiri to Hyderabad, Hyderabad to we took that Bangalore. sideway. That most beautiful scene. स्विट्जरलैंड में क्या है, ये मेरा पीपल में डिसएग्री और मैं एंग्री विथ मी, आई टेयर हुड टू इट। योर पॉइंट इज टेकन, आपने बता दिया, सब लोग ने सुन भी लिया कि पहले हम लोग भारत दर्शन करें, उसके बाद बाहर की सोचे। ये बात सही है। अभी जनरेशन नेक्स्ट जो हमारा है, दे हैव देयर ओन व्यूज एंड चॉइसेस। I respect them. I respect the young generation. Right. हाँ। नहीं, आपका गया फिर से। So that was the best vacation from your hometown to Bangalore, जो आप road से। Bangalore on car. Memorable trip for you. Absolutely, sir. Absolutely. Jaipur to Malkangiri, all this, then Hyderabad to sideway to Bangalore. Absolute trip. Wonderful. It's more than Switzerland. I think आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, but I think most of the people here will be able to relate to what you are saying कि इंडिया में जो है शायद। Absolutely. I respect them. Whatever their views are, I respect them. So thank you सुरेश नंदा जी, आपकी राय हमने सुनी। I'm sure अमल भी करेंगे कुछ लोग इसमें, पर क्या है? I care hoot, sir. अमल करें या ये करें, वो I care hoot. What people say. ऐसा भी मत रहो, ठीक है, आपने अपनी राय सुना दी, लोगों ने सुना, अमल करें नहीं करें कोई बात नहीं। I respect all of their views. चलिए, thank you so much सुरेश जी। Now Saroj ji, kindly unmute and please share your thoughts on vacations. We are colonial psychic. That's the problem. कोई नहीं जी। Hello. हाँ जी, very good. Hello everyone. Hello, good evening to you, Saroj ji. Good evening. Sir, I have seen most of India except the Madhya Pradesh. Oh. And we have taken lots of like vacation in spite of our busy schedule. So we used to take the long vacation of 3 weeks and 2-3 small vacation, 2-3 days here and there, to small places like hill stations like Lonavala, Mahabaleshwar, there's that. But long vacation like of 3 weeks, we had neighbors. Out of them, we were 3 like good friends in the neighborhood in the same building. One family was Punjabi, they were Manans, and one was South Indian Naidus,
and we were Gujaratis, Vasa. So our group used to be called as MNV group. Okay. MNV group. Naidu So and we Vasa. used to plan long holidays together. So Wonderful. if the holiday is in the north, like then the Punjabi will take the lead. He will arrange all the site location, bookings and all that. And another will be the treasurer. Contribution करना रहता है अपना सब बिल्कुल. अपने अपने फैमिली का. So initially we will part with some money, and if it is used up, the treasurer will write down, how much expenditure and money is used. The other one will enjoy. So if we have gone to south, the Naidus will take the lead, and he will show us the places, and he will do the bookings. And if we have to go to Gujarat, like we will do, like Gujaratis will do. So Okay. it used to be fun, and my children were the youngest. The other people, their children were quite older. Good. So I had like no tension at all looking after my children. They used to play and, get together, get along so well that I never used to bother how they are growing up, and learning from each other. That's how my children grew up. So we had lots of holidays. We have seen most of India, and sometimes other people also, like these. We three were always there. Punjabi, South Indian, and Gujarati. We were always there. But if other people also wanted to join from the building, they were also allowed. Like in the group, and everybody used to enjoy. There used to be no cribbing, like who's eating what, why. Like everybody was happy go lucky. And in Wonderful. this, what happened once we were going to Kashmir and Jammu Kashmir, and our friend, Punjabi friend, we had hired a van to go to VT station, and they were staying in the higher floor, and we were on the first floor, and our hospital was on the ground floor. So we were the lowest. So we put the baggages first in the van which had come. And other people's luggage was coming slowly in the lift, and everybody then down, downstairs, like helping the people to put the luggage and all. In this, what happened that when we reached Delhi, suddenly, no, when we reached the VT station, the Punjabi fellow realized that one of his bag has been left in the lift, Oh. and everybody's bags were there. His other bags were there, but one of the bags, which was containing all the warm clothes, was left in the lift. So, suddenly now what to do? So we phoned from railway station, because that time there were no mobiles and all. So we phoned in the hospital and told them, you go and see, there must be a bag in the lift. So take it and keep it in the hospital, because we couldn't come back to pick it up from VT station. We will miss the train. So And his somebody brother couldn't was deliver it living also. in Delhi. So he contacted his brother, and that at Delhi, we reached in the midnight, around 1:30, 2 o'clock. We had reached Delhi. So Oh, his brother brought all the downfall. woolen clothes, and some clothes after reaching Jammu he bought, and that's how he was there. From there, we had to go to Vaishno Devi. And this man, not Very having difficult. proper clothes and bare feet, he was on the snow he was walking, and we reached Vaishno Devi. That's how. But then what he said, at that time, that whatever things were there in the bag, he is not going to utilize. And because he thinks that माता जी ने माता जी ने चुना हुआ हमको है. बोला है लाना नहीं इधर. So I will donate all that, whatever is in that bag. So it was a Nikon, CSR camera, big camera he had.
and lots of clothes and all. So when we came back, he gave camera to us and other clothes to whoever wanted, like, you know. So from there, you know, we learned ऐसा कैसा त्याग करना चाहिए, you know, like एक माता जी ने बोला है कि ये चीज नहीं लाना तो उसका यूज ही नहीं करना. He was such a big hearted man. He was actually captain in the navy. Oh, okay. He was not captain, he was a commander in the navy, and we were doctors, and other fellow was working for the government, you know, Naidus. So Oh, that is what we learned from that trip. That you know, like अपना त्याग करना भी कुछ फर्ज होता है. Like उसके बाद recently I had a trip to like I had taken a cruise in 2017. And actually, I'm Sindhi, sir. I'm married to a Gujarati. So all over the world, Sindhi Association was there in um, from Singapore. It was in Hong Kong. Hong Kong. So What's we up? had gone to Singapore. Then we got into the cruise from Singapore to Bangkok, and then to Hong Kong, then Mackay, Vietnam in between. So all these places we went, and all over the world, like 700 Sindhis were there on the cruise. So Oh, it was really a fun, you know. And I was with my brothers at that time. I have lost my husband, so that was also like, you know, on my own. It was a good trip. It's worth remembering to go on wow. a cruise. You know, plane to जाते ही हैं, but Ah. cruise is like, you know, one should have that cruise का यात्रा भी करना चाहिए. It's How long did it take for the whole entire cruise? How long it lasted? it was a cruise was 3 days. To first we went to from Singapore to Hong Kong. Hong Kong. No, sorry, Bangkok. Bangkok. And then they had arranged the tour. From there, they left us on the docks, and from there was another bus was hired, and booking in the hotels was done. Whoever wanted to go to hotel can go to hotel or go to relatives or who were friends, whatever who had. So we had 2 days in Bangkok, then 2 days in Vietnam. We came back at night, you know, we to come back at night after visiting the place. And next day again in the morning from cruise, you go out and visit the places. Ah. So yeah, then from Bangkok to Vietnam, then to Hong Kong, and from Hong Kong in the cruise, another small cruise to Macau. Macau is very small city, but very beautiful and very rich, country. Macau is a small country. Hardly उसका कुछ 300 square meters जगह है. But the hotels are so nice. I have never seen such a lavish hotel. So beautiful. Like बॉम्बे में भी अपना ताज भी उतना अच्छा नहीं है जितना that thing was, you know. Okay. So we enjoyed a lot, but my recommendation, if nobody has gone in the cruise, please go and see. Or the life is different, you know. There's inside the whole world is there. Good. That's it, sir. You can take over to someone else. Thank you, Sarojji. It was good to know about your experience of a long cruise, and we have had short आपकी cruise. आवाज नहीं आती सर. क्या बात है यार? I don't know. I'm on my full volume here, or at least it shows 100%. I'm not heard any. Something has gone wrong with my laptop probably. नहीं, हम लोगों के पास तो आ रही है. आपको आ रही है? चलो कोई नहीं, कोई तो ऐसे सुने. आ रही है पर क्लियर सब सुनाई नहीं देता. अच्छा, चलो आज झेल लेते हैं. तो आज मैं ज़्यादातर सुनूंगा. So ज्ञान शुक्ला जी बोलना चाहेंगे. प्लीज गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ ज्ञान जी. Any next person, please go ahead and raise your hands, please, using the reactions button. नमस्कार के सर. नमस्कार. बचपन में तो मैं सीतापुर में पढ़ता था. यूपी का एक जिला है सीतापुर. वहां से मेरा गांव
25-26 किलोमीटर पे है कमलापुर। तो जब गर्मी की छुट्टियां होती थी, जाड़ों की छुट्टियां तो मेरे स्कूल या कॉलेज में ज्यादा होती नहीं थी, तब विंटर वेकेशन नहीं होते थे। गर्मियों की छुट्टियां 1-1.5 महीने की होती थी, तो उसमें हम लोग अपने चाचा जी के यहाँ चले जाया करते थे। और आम की फसल होती थी, और चाचा जी को भी आम का शौक था। हम लोग भी खूब आराम से 1-1.5 महीना वहाँ रहते थे, आराम मौज करते थे, घूमते थे। मिठाई का भी उनको बहुत शौक था, मिठाई भी हम लोग खाते थे। बड़ी अच्छी कटती थी छुट्टियां। उसके बाद बैंक में जब आया, तो हम लोगों के यहाँ 2 तरह के ऑप्शन होते थे। LFC, लीव फेयर कंसेशन होता था उसमें बैंक में। तो उसमें एक 2 साल का होता था, एक 4 साल का होता। तो मैंने 2 साल वाला ले रखा था। तो हर 2 साल में फैमिली के साथ कभी वैष्णो देवी चले गए, कभी ये शिमला, कुल्लू, मनाली इधर चले गए, कभी साउथ का एक पूरा टूर लगा लिया, कभी राजस्थान की तरफ चले गए। उसमें काफी कुछ घूमना हुआ। ज्यादातर फैमिली के ही साथ जाते थे। हमारे भाई साहब भी बैंक में थे, कभी कभी वो भी अपनी फैमिली, हम दोनों लोग साथ चले जाते थे। मदर होती थी साथ में। बहुत सी यादें ऐसे तो जुड़ी हैं वहाँ उसकी। लेकिन अब आजकल भी मैं यात्रा में ही हूँ। मैं अपनी बेटी के पास अबू धाबी आया हुआ हूँ। ओके। 25 फरवरी को आया हूँ, 25 मार्च को वापस जाऊँ 1 महीने के लिए। वाह। तो यहाँ भी आपकी चौथी बार चूंकि आए हैं, तो सब दुबई और शारजाह अबू धाबी सब खूब घूमा, सब देखने वाली सब चीजें देख चुके हैं। तो अब यहाँ भी कुछ देखने का वो बचा नहीं। अभी अब अबू धाबी का मंदिर नया बना था, तो अभी सैटरडे हाँ। को हम लोग जाके वहां देखा है उसको। बड़ा अच्छा बनाया है। अंदर अच्छा। नक्काशी वगैरह सब पत्थर में बड़ी बढ़िया बनी। और दुबई का भी मंदिर जाके देखा, वहां पे भी है। वो तो दुबई का तो छोटा है, लेकिन अबू धाबी का मंदिर काफी बड़ा बनाया है। ये अक्षरधाम वालों ने बनवाया है। अक्षरधाम में। अच्छा है, अच्छा है। अक्षरधाम, और वो करीब काफी अभी तो बन ही रहा है। करीब 26-27 एकड़ जमीन है उसमें बन रहा है। हम्म। और उसमें मंदिर के अंदर भी काफी मूर्तियां हैं देवताओं की। मतलब शंकर पार्वती भी हैं, राधा कृष्ण भी हैं, राम दरबार भी है, उनके जो ये महाराज वगैरह भी हैं, सब की मूर्तियां भी हैं। काफी बना है। बड़ा अच्छा बना है। फोटो वगैरह निकालने को हाँ, अनुमति? फोटो वगैरह है। देख, अंदर तो खींचना मना है हाँ। मूर्तियों की, लेकिन बाहर खड़े होके जो मंदिर का जो है वो उसकी फोटो लेके हम भेजेंगे। हाँ हाँ। बाकी तो हर जगह। लेकिन तो एक मैं बॉम्बे और गोवा एक बार जब गया था घूमने, हाँ हाँ। तो वहाँ एक मेरी कुलीग हैं, तो उनकी शादी वहीं बॉम्बे में हुई। पर पारसी लोग हैं वो लोग, बहुत अच्छी फैमिली, मतलब पारसी इतने शरीफ होते हैं। मैं वहां अच्छा। जान के मुझे पता लगा, मतलब वाकई इतने बढ़िया इंसान हमने देखे नहीं। ठीक है। तो बहुत भले लोग। तो उनके वो हस्बैंड बोले नहीं, आप लोग डिनर विनर खाए बगैर भाई नहीं वापस होंगे। तो हम लोगों की ट्रेन थी करीब 11, 11:30 बजे रात में वापसी की। तो 9, 9:15 बजे उनका आगे चलिए डिनर पे चलते हैं। तो हमने कहा सामान लिए चलें उनके। अच्छा, वो रहते फोर्ट एरिया जो है ना बॉम्बे का, हाँ जी। उसी के पास उनका मतलब एक रेजिडेंस कम घर था। मतलब रेजिडेंस कम ऑफिस, बल्कि ऑफिस भी था उसमें। उन्होंने 1-2 कमरे भी थे, उसमें रह भी सकते थे, ऐसा बना सकता है। बहुत अच्छे एयरपोर्ट में बिल्कुल। और ये आपका स्टेशन भी वहीं करीब है, जो CST वाला। यहाँ CST जी, वीटी स्टेशन। हाँ, थोड़ी नजदीक ही है। तो उन लोग वो चूंकि जिंदगी भर बॉम्बे में रहे थे, उनको तो सब पता ही था। हम लोग तो नए थे। तो हमने कहा सामान, तो बोले अच्छा सामान लिए चले। तो सामान उन लोग अपना होटल में ही खींच के ले गए। अच्छा, वहां उन्होंने पूरा डिनर में सूप से लेके और आइसक्रीम तक का पूरा उन्होंने
मेनू धीरे धीरे वो सब शुरू किया, वो सब आता गया भाई। अब 10:30 पौने 10:30 बज गया, तो हम लोग तो सांस ऊपर होने लगी कि मतलब ऐसा ना हो कि ट्रेन भी छूट जाए। तब थोड़ा उनको भी एहसास हुआ, उनका ऐसा है अपनी जो हमारी कोलीग थी, हमारी साथी, तो उनसे कहा तुम अच्छा लेके इनको स्टेशन पर हम सामान लाते हैं। तो हम लोग पैदल ही वहां से होटल जहाँ से खाना खाया तो वहीं से निकले और स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन पर चढ़ गए, सामान आया नहीं। गाड़ी ने एक सीट ही दे दी। तो जो हम लोगों की साथी थी वो भी बोली ये लोग तो मतलब ऐसे करते हैं, तो बॉम्बे में रहे हैं जिंदगी में, इन लोग तो लगता है। तो हमने कहा चलो फिर अब आप हम तो चले जाएंगे, सामान फिर बाद में आएगा, अब देखा जाएगा। तब तक बस दूसरी सीटी बजने वाली थी, और भैया वो मार भागते हुए उन सब सामान वामान लाद के वो उनका भांजा भांजा किसी तरह गाड़ी में चढ़ाया, और बस ट्रेन चल दी। जान बची मतलब लाखों पाए। ऐसे ऐसे वे होती हैं चीजें। ऐसे एक बार हम आंध्र एक्सप्रेस, बहुत अच्छी चलती थी आंध्र एक्सप्रेस, हैदराबाद से दिल्ली, नई नई मतलब तब चली थी, काफी साल हो गए। तो उसमें बैठे, विजयवाड़ा में कुछ रेलवे की स्ट्राइक हो गई। ओके। तो आप समझिए विजयवाड़ा में 10-12 घंटा खड़ी रही गाड़ी। पानी खत्म हो तो गया। हम लोगों को जो झांसी सुबह 7 बजे पहुंचना था, वहां से लिंक ट्रेन थी हमारी लखनऊ के लिए। झांसी से वो सन दिल्ली चली जाती थी, और हमको झांसी से बदल के दूसरी लखनऊ उसके लिए ट्रेन पकड़नी थी। वो सुबह 7 बजे, वो करीब 8-9 बजे वहां से जाती थी, 2-3 घंटे का मार्जिन था। लेकिन ये 7 बजे के बजाय रात में पहुंची जाके 10-11 बजे, इतना लेट हो गई। फिर अब एक पैसेंजर बड़ी मुश्किल में मिली वहां से, रात में चलती थी 1-2 बजे। वहां से किसी तरह कानपुर पहुंचे, कानपुर से लखनऊ पहुंचे, तब जाके घर पहुंचे। कानपुर लखनऊ भी करीब 150 किलोमीटर का है ना? हाँ जी, कानपुर लखनऊ भी 150 किलोमीटर का है ना? कानपुर से लखनऊ करीब 80-90 किलोमीटर है, लेकिन झांसी से करीब 200 किलोमीटर होगा। ओके। 150 किलोमीटर, 200। तो बहुत सी यादें हैं यात्राओं के तो। बहुत अच्छे जी ज्ञान जी, अच्छा लगा आपकी बात सुन के। थैंक यू। थैंक यू। मंजुला जी, प्लीज गो अहेड, अनम्यूट कर लीजिए एंड शेयर योर थॉट्स। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर, नानी के घर में रोटी खाना अलग मजा था, वो बचपन अलग था। फिर बड़े हुए, शादी हुई, फिर शादी के बाद में फिर फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना करना, वो एक अलग एंजॉयमेंट था। और इस एंजॉयमेंट में मैं फ्रेंड्स के साथ में भूटान गई थी। भूटान गई थी तो हम लोग बाई ट्रेन गए थे। आई एम स्टेइंग इन कोलकाता। कोलकाता से फिर हम लोग सिलीगुड़ी गए, नहीं कूच बिहार गए। कूच बिहार से फिर बाई कार हमको भूटान जाना था। तो कूच बिहार में हमारे एक रिलेटिव रहते हैं, तो वहां पे हम लोग सवेरे सवेरे 4 बजे करीब कूच बिहार पहुंचे। हम लोग कूच बिहार में फिर उनके घर पे उनको मैसेज कर दिया था कि हम लोग आएंगे। तो दे वर वेटिंग फॉर अस ओनली कि भाई इन लोग आएंगे करेंगे। फिर 2-3 घंटा वहां पे रुके कूच बिहार में। उसके बाद आगे हमको भूटान के लिए जाना था। तो बाई कार आगे का है कि भाई बाई कार जाना है भूटान के लिए। तो बाई कार हम गए, तो भूटान बॉर्डर पहुंचे। भूटान बॉर्डर पे जैसे पहुंचे तो परमिट की जरूरत है भूटान एंटर करने के लिए, उसके विदाउट हम एंटर नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे हमारा एक कांटेक्ट हुआ था, एक हमारे रिलेटिव थे, फ्रेंड्स थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, बिजनेस फ्रेंड। तो उनके थ्रू वो भूटान का उन लोग ने पूरा कांटेक्ट करके रखा था कि भाई ऐसे ऐसे आदमी से मिलोगे और वो तुम लोग को भूटान ये सब घुमाएगा, स्टेइंग वेइंग सब चीज के लिए वो करके रखे हुआ था। ओके। फिर भूटान, अब जिस हम लोग ट्रेवलर्स में गए उसमें हमारे साथ एक बंगाली ग्रुप भी था। हाँ हाँ। वी वर ओनली 5 of them, my friend's son
एक्चुअल में उस टाइम पे मेरे फ्रेंड की वाइफ एक्सपायर हुई थी, तो हमको उसको चेंज करवाना था कि आदमी का माइंडसेट पूरा चेंज करना बहुत जरूरी होता है। तो फिर मैं हस्बैंड वाइफ, हम लोग हस्बैंड वाइफ और बच्चा मेरा, उनका बच्चा और वो फ्रेंड, तो हम लोग 5 जन गए थे। तो अब वो बंगाली ग्रुप वर नॉट ट्राइंग टू एडजस्ट विद अस, मैनी एडजस्ट एंड मैनी डज नॉट एडजस्ट। तो उन लोग बहुत बड़बड़ करने लगे कि हम लोग पीछे नहीं बैठेंगे, हमको आगे बैठना है, मतलब स्टेयरिंग साइड में हमको उधर साइड में बैठना है, आप लोग पीछे बैठिए, ये करे। तो भाई जो बस में घुस गया वो अपनी अपनी सीट ले लिया, अब कोई चेंज नहीं करेगा, बात ये हो गई थी। उसके बाद में ठीक है, और मेरी आदत है कि मैं जब भी बस में कार में जाती हूँ तो मेरी आदत है मैं प्रेयर्स करते हुए जाती हूँ। आई कांट रिलाई कि खाली गाना वाना गा के चलो और ऐसे कुछ नहीं, मेरे को प्रेयर्स का रहता है कि मैं प्रेयर्स करते हुए निकलती हूँ, एंड स्पेशली हिली एरिया में मेरे को वो थोड़ा रहता है। सडनली हुआ क्या था, मिडल वे ऑफ भूटान, हिल की बात बता रही हूँ अब। ओके। ड्राइवर को एक झपकी आ गई, अरे बाप रे। So very ड्राइवर risky को thing. झपकी आई, हमारी जो ट्रेवलर्स थी वो एकदम ऐसे हो गई, नीचे Oh. खाई ऊपर रास्ता, और हमारी गाड़ी 3 व्हील खाई के उधर है, एक व्हील हमारा इधर है ऑन द रोड। सडनली वो जो फ्रेंड था उसको लगा ऐसा कुछ कि भाई वो ड्राइवर को झपकी आई, उसने एकदम स्टेयरिंग को जोर से घुमा दिया, तो हमारी गाड़ी अटक गई 2 व्हील पे और 2 व्हील खाई पे। इस तरीके एकदम से ड्राइवर उठा, बेचारा इतना सॉरी बोला, इतना सॉरी बोला, और फिर वो बंगाली ग्रुप इतना चिल्लाने लग गए थे, ये वो बोले शांति रखो सब लोग, सब आराम से शांति से करो, तो सब है। फिर ड्राइवर बोला, और बहुत हेल्पफुल पब्लिक, जितनी गाड़ी, जितने बस, जितने वहां पे जा रहे थे, सब बहुत हेल्पफुल, सबके सब एक लाइन से खड़ी हो गई, जितनी भी गाड़ी ये सब थी सब एक लाइन से खड़ी हो गई, कोई रोप निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर हम लोगों को भी दरवाजे से, ड्राइवर के दरवाजे से धीरे धीरे हमको सबको बाहर निकाला, क्योंकि उस साइड का दरवाजा खोलेंगे तो नीचे खाई है, वहां तो जा ही नहीं सकते। एक एक को सबको बाहर निकाला, फिर वो रोड पे आके फिर वो बंगाली चिल्लाने। हम बोले देखो आदमी से मिस्टेक होती है, हम लोग ये तो नहीं बोल सकते, हर इंसान है, वो भी इंसान है, गाड़ी चला रहा है, कर रहा है, इतनी दूर चलाना है तो थक जाता है आदमी, नींद आ गई, कोई बात नहीं है। बट हम लोग दूसरी गाड़ी, मतलब आप लोग को जिस गाड़ी में जाना आप लोग जाइए, हम इसी बस में जाएंगे, हम लोग इस बस को नहीं छोड़ेंगे। एंड ड्राइवर वॉज वेरी गुड, आई हैव टू से यू कि ऐसा बंदा नहीं मिलेगा, इतना अच्छा ड्राइवर था। दो ही वॉज हैविंग अ वेरी रिग्रेट एंड ऑल, बट ठीक है देन टू। फिर लास्ट में उन लोग भी हमारे साथ में ही आ गए, बंगाली ग्रुप। और कौन सी गाड़ी रास्ते में, आधे रास्ते में कहाँ पे आपको गाड़ी मिलेगी, बस मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलने का है। फिर उन लोग चुपचाप बैठ गए हमारे साथ में। फिर बोले नहीं आप दीदी, आप है ना भजन वजन गा रहे थे ना, आप वो सब करो, हम लोग भी है ना आपके साथ साथ में गाएंगे, तो गाओ, हम तो मना नहीं किए, नहीं तो आपको आगे बैठना है आप लोग आगे बैठिए, हम पीछे बैठेंगे। अब हमने ऑपोजिट गेम कर दिया, दीदी आप लोग को आगे बैठना है, आप लोग आगे बैठिए, हम लोग पीछे बैठेंगे। कोई नहीं 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 दीदी आप लोग है ना आगे बैठिए, हम लोग पीछे बैठेंगे। फाइन, दैट टू ऑल्सो फाइन। ऐसे करके हम सवेरे के निकले हुए हम रात में भूटान पहुंचे। अब वहां पे वो फ्रेंड वो वेट कर रहा था हमारा कि भाई अभी तक गाड़ी आई नहीं है, कुछ आया नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कैसे क्या है। एट लास्ट हम लोग को उन लोग मिले, फिर हम लोगों को होटल में जिसमें भी उन लोग ने बुक किया था उधर रुके किए, पर फिर बाद में हमको पूरा और उस टाइम पे वो किंग की शादी थी वहां पे, भूटान के किंग की शादी थी उस टाइम पे। तो 7 डेज का फंक्शन चल रहा था वहां पे, तो सब पूरी पब्लिक वो पैलेस में जाके बैठ जाते थे,
और वहां पे वो फंक्शन देखते थे, वहां पे वो डांसेस होता था, अपने ड्रैगन डांस होता था, कभी कुछ डांस हो रहा है, कभी आदिवासी डांस हो रहा है, ऐसे करके वो प्रोग्राम सब लोग वहां देखते थे। और हम लोग फिर थोड़ा बहुत घूमते रहते थे कि भाई आसपास की एरिया हम लोग घूमो, क्योंकि 4 डेज के लिए हम आए, 5th डे शादी होने वाली है, तो 4th डे हमको निकलना है वहां से, नहीं तो फिर हमको सब रोड, टोटल रोड बंद कर देंगे उन लोग। ओके नहीं 5th डे नहीं, 6th डे शादी होने वाली थी, हम 4th डे निकले, नहीं तो फिर पूरे रोड्स ब्लॉक कर देंगे उन लोग। एंड सच अ गुड दिस थिंग कि इंडियन सोल्जर्स पूरा वहां पे काम कर रहे हैं। ओके भूटान इज टोटली कंट्रोल बाय इंडियन सोल्जर्स। राज किंग है, सब है, पर इंडिया का इतना बड़ा सपोर्ट भूटान को है कि पूछिए मत। एंड व्हाट अ सैनिक ब्यूटी, आई विल से पर्सनली, कोई मेरे को पूछे मैं बोलूंगी सब सीनियर सिटीजन्स को भूटान जाना चाहिए। वाओ ओके दे विल टोटल, मतलब you all will have a very amazing experience of Bhutan. आई सी ओके बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है, एंड इट इज सो पीसफुल कि सब हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पिंग हैंड है, बहुत सपोर्ट है वहां पे, बहुत अच्छी जगह है। मतलब हम लोग ने उस टाइम पे, अब तो मेरे हस्बैंड नहीं है, उस टाइम हम सोचे रिटायर हो जाऊंगा ना तो फिर अपने भूटान में आके रहेंगे। दैट इज द थिंग आई लिव टू से योर। what Thank was you, the sir. what was the language you could speak in Bhutan? English? English goes well. हाँ, English we can speak. Many speak in Hindi also. There are many dictators there. वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, but mostly Hindi, English was working. Oh, okay. Sounds good. Thank you इनका so क्या much. लिख It's दिया something है, new for नाम us to पता know. नहीं चल रहा। Yes, sir. Something new for us also. I have not been to that part of the world. Yes, so you should surely go. I'll have to say everybody should go there. एक बात बताइए, वहाँ वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा क्या? आपको जैसे सब कुछ मिलेगा वहां पे, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन वेज भी है, वेज भी है, सब चीज है वहां पे। अच्छा, पता नहीं, हमने सुना था कि वहाँ वेजिटेरियन नहीं मिलता है खाने जी को। नहीं, आराम से आलू पराठा, दही वही, नान, कुलचा, आपको क्या खाना है सब खा सकते हो आप वहां पे। ओके ओके, थैंक यू। हम एक बार प्लान करेंगे जाने का। नहीं जरूर, मैं तो बोलूंगी आप लोग पूरा प्लान करके जाइए, परमिट वर्मिट लेके जाइए, ताकि हाँ, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आए, और आराम से आप लोग स्टेइंग ये सब का करिए वहां पे। बहुत अच्छी जगह है, इतना सुंदर है, मतलब यहाँ पे हम जैसे कुल्लू मनाली और ये सब जाते हैं, पर भूटान इज अ डिफरेंट प्लेस, ओके, अमेजिंग। और फ्लाइट्स भी जाती है भूटान, और ट्रेन से फिर बाई कार करना है तो वैसे कर सकते हो, और फ्लाइट्स भी जाती है, ओके। दोनों काम है। आप लोग बाय कार गए थे? हम लोग बाई कार किए थे। तो रास्ते में ज्यादा अच्छा लगा होगा ना, पूरा सीनरी वगैरह सब देख हाँ, के? मेरे को वो पसंद है ज्यादा, इसलिए फिर कितना बाई टाइम कार लगा किए। था? कहाँ से आपने किया था? हम तो कैलकाटा रहती हूँ मैं। अच्छा, तो कलकत्ता से गए? आज रात की ट्रेन पकड़ी, कल सवेरे सवेरे 4 बजे पहुंच गए हम कुछ बिहार, और अच्छा कुछ बिहार से फिर बाई कार हम आगे का बढ़ गए थे। अच्छा फिर वहां परमिट में टाइम लग जाता है, अच्छा। भूटान बॉर्डर पे परमिट में टाइम लगता है, इसलिए परमिट पहले से आप लोग वो रेडी करके। वो यहाँ से बनवा के ले जा सकते हैं परमिट? हाँ, आराम से ले, भूटान से, the भूटान travel टूर agency से will be able आप to लोग help. कर सकते हो। यस सर। No, travel agencies can help us for हाँ that. भूटान ट्रेवल एजेंट, भूटान एजेंसी से आप लोग वो काम करवा सकते ये हो वो लोग सर। करा देंगे. Anyway, thank you so much. बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के. Now we move थैंक to यू आशा सर। जी. आशा जामकर जी हैं. Please unmute yourself. Thank you. Good evening, sir. Very good evening. Am I audible? Very well. Okay. I was saying that traveling was wonderful in those days when we were young, going by trains to different places, carrying hold all food, everything with us. That was a different kind of fun. But now things have become so easy. Just carry a small briefcase and you can start off.
after reaching the destination, everything is available for us. So pattern of traveling has changed. Vacations are, of course, vacations. They are always enjoyable. What matters is your company. Should have a good company to enjoy that stay over there and moving about everything. So recently, whatever was done in recent years, I'll describe that part. Sure. We had planned to travel certain places of America, that is Canada and US, both. Okay. So first we went to Toronto. From there we went to Rocky Mountains. I wanted to explore certain places from geographical point of view. All right. Like sightseeing, of course, is there, but like Rocky Mountains are the young fold mountains. Himalayas are also young fold mountains. Himalayas are the highest. Rockies are having lesser height than Himalayas. Oh. But the kind of development is done on Rocky Mountains is also fantastic. Roads and everything, very broad and wide and kind. Nice. Traveling was easy there. Both sides, like, snow, mountains with snow, rows of mountains with snow we could enjoy. So from Vancouver towards north, we proceeded on the Rocky Mountains trip. And certain places, what I remember, were fantastic to observe, like gardens. One of the gardens was Victoria Gardens. Oh. Beautiful, very large area it had, and kind of flowers it had, and very, very well maintained. I couldn't see, dried leaves anywhere. How they are maintaining, it is their management. But really wonderful. Then lots of lakes covered with snow also, because as we go to the height, lakes are also found in a snow-covered state, frozen state kind, snow-covered. And lastly, we watched there one Lake Louise, where the water was fantastic. I mean, absolutely pure blue, green kind, and beautiful color. Very that kind of fresh, like color of water we see in Andamans also, Andaman Nicobar Islands. So that is also because people are not there throwing anything, dirty things. So it remains clear water. So the color is also very good. Their Lake Louise was very pretty to watch. Mm-hmm. Of course, it could be watched only from the distance. We could not reach that spot because lots of mountainous regions are there. It was not possible to cross that part. So just the sightseeing part. And further north, when we went, it was Athabasca Glacier. That glacier was also fantastic, where the tractor of 3 generations were seen by us, and how they were moving and trying to clear the snow of that region so that people could go and enjoy certain part. And after certain distance, there was an obstruction for us not to go beyond that. That was the risky area. That is why. So wonderful to watch all that. Then we went here. Then we came down to US part, the Colorado region. The river Colorado made this valley, Grand Canyon over there. That was worth seeing. Again, geographically, I wanted to observe all that. So good, wonderful. The largest Grand Canyon in the world. So like that, because all buildings, shops, they are same everywhere. But geographical regions are different. So from that angle.
And Can from you explain a little bit of geographical viewpoint? What would you observe there? yes, like Grand Canyon, we had been studying in geography in the textbooks. What is a Grand Canyon? It's a like gorge and canyon. There is a difference. Gorge is a straight valley. The river that makes a valley having steep walls is a gorge. That is a Narmada River. It is making a Bedaghat Valley. Bedaghat is an example of a gorge. Straight one, okay. And this is a Grand Canyon in America, US, made by river Colorado, which is wider. It is not having a straight. The river, when the river had been flowing since ages, this Colorado River, it did down cutting as well as side cutting also of the mountain. So the valley became very wide. बहुत चौड़ी है. So this Grand Canyon is the widest, largest canyon made by this river in the world. Oh, okay. So all that I wanted to see. So that was all very wonderful there. Then hot geysers in the this Yellowstone National Park. That was also old. Yellowstone National Park. In that we saw several hot geysers. That was also wonderful to watch. How continuously the gases are coming out from the earth upward, like a fountain. So, but it was again having a restricted area. Too much close to that, we were not allowed to go. Only from the particular area we have to watch that. Barricade was made over there. Okay. So this was also wonderful. And then of course, this Disneyland and all, it's all man-made. So this is not, I was not very much fascinated by that, but geographical region, I was more fascinated by that. Nature. Then Caribbean Sea also we went from there. And one of the islands over there in the Caribbean Sea for the cruise. So that was also a wonderful experience. And in such cruise, where we meet people of different countries, there I experienced one very interesting thing. People come from different countries, but they were having their own mother tongues. All the travelers were not well versed in English. English becomes the common language when we go outside the country. So it was very tough for us to interact many a times. Because we were speaking English, some people were speaking Spanish, some people were speaking German. Now, some people were of different countries. Now, we could not communicate with each other very well. So sign language became a common language for us. So new experience, all that was. So our interaction used to be in the sign language, most of the places. Okay. So that was again interesting. So many a times Caribbean islands. You visited any Caribbean islands? Pluto, I'm forgetting the name now. Puerto Parta, something. In that. So that was also wonderful. For 7 days, that cruise was. Okay. So we had traveling becomes easy these days. So we could reach there just in a small. One second. Okay, Jage sa naam kya hai? Anyways, so there are several islands, Dominican Republics. Oh, Dominican Republic. Okay. Dominican Republics. I could recall immediately. So because in one go we traveled in 2 months of time at so many places, but wonderful experiences we earned.
And then, seeing their wonderful scenery, etc. When I asked my husband, let's stand here and give some pose for the photography, and so the guide will click. So when we were giving those photograph poses, the people from different countries, they were, really fascinated by those poses, and they said, "Oh, lovely Bollywood poses, Bollywood poses. We will also do that." So that was wonderful again. Bollywood is That very, was, very popular. and Bollywood songs, Bollywood movies, they enjoy. Good, nice experience. So lovely experience was that. I wanted to share that. Nice, very nice, Ashaji. Thank you so much for excellent articulation. Both Thank you. बढ़िया. Lots to learn. And Yes. then we compare also what else is needed in our country now to develop those places. We also have here, I believe in Madhya Pradesh, near Bilaspur, one waterfall. So that also can be developed into, Yes. the water is little not very clean. Like Niagara Falls is there in Canada-US border. But here also we have. I think there is a lot of marketing and branding work that we can do and develop some of Yes. these places which have a lot of scenic, beautiful things. Yes. Unfortunately, tourism has not caught on the way it should actually, Yes. barring a few places. But If that is work, if people of the tourism department will really work on it, it will right, be fantastic here itself then. I would think so. Anyway, thank you so much, Ashaji, for taking us through Canada and US Thanks a lot. and Caribbean islands. So now no hand is raised. So should I start picking up the people? The first one on my screen is Jaya Prasad. So can I request Jaya Prasad ji to unmute? Good evening, sir. Good evening. Good evening, everyone. What to say? I love traveling. Nobody spoke about the building up of a vacation, how it gets planned and how it is built. So, as a child, probably some of those building up and exciting activities would that have precede the actual vacation. So during school days, I can say that every vacation we used to go to Bombay, Ghatkobar. My uncle used to be there. Yeah, my uncle used to be there. So most of the time we spent there. My cousins, they used to take us around Bombay. Ghatkobar, Mulund, and that Nehru Stadium. Central suburbs. Almost all places in Bombay. Then during school days, they used to go for picnic every year in the school, from the school side. But I have not gone for any of the picnics through the schools. They once before our board exam, they took us to Lonavala. That also I missed. I couldn't go with them. And afterwards, after the schooling, after pre-degree, immediately I had to join job. So that was also again that was not a vacation. Whenever I take leave, that used to be the vacation for me. But during 1981-82, our company, there was a labor strike. During that period, I took my mother to the south side, Kumbakonam, Tanjore, many of the temples I took her to, and we visited many 6 houses of Murugan, Lord Murugan. Those places we visited. Then during our bank service, I joined my bank in 1982. So during that, after that, from the bank side, many of our friends, we went to Shimagawa, what is that? Shivatal in Maharashtra.
It was almost like a trekking to all of them. That was very enjoyable. Long walking to there was one Shiva temple and one lake, one dam was there that we visited. That was the first thrill that I could enjoy. And after that, after marriage, we undertook so much of travels to various places. My husband, he took us to various places, and almost for every vacation, we used to visit Kerala. My in-laws used to be there in Kerala, Malappuram district, and from there, almost we used to take 3 weeks leave from our service and take our children. So my father-in-law used to chart out where all to go, which places to visit. Accordingly, we used to go for every vacation. So in Kerala, Adirapalli, there is one waterfall place, Adirapalli. That is really like Kutralam. Kutralam I have not visited, but Adirapalli waterfalls, that was really exciting. And Kerala, beautiful sceneries are there. It is always green. Anywhere you look, it will be green. So in Kerala, almost all places we covered. Then my daughter and her friend's family, we only girls. We went to female, myself and my daughter's mother and my daughter and her friend. Only 4 of us went to Andaman Nicobar. Yeah, from Andaman, we traveled to see the Kalapani jail. By cruise, we went. Okay. That was really exciting, sir. And the sea, you can see the color of the water in different colors. In one place, it used to be green. In other place, it used to be blue. So beautiful and very clean water. It used to be. That we really enjoyed. That cruise, it took us around 2.5 hours time to reach Port Blair and see around the jail. They allowed the visitors to go around the jail and see how criminals were hanged and all those places. That was really exciting. Okay. Then almost we traveled to Calcutta, then this Orissa side, Bhubaneswar. Then we went to Mau for one Deepavali. My brother-in-law, he was in the army. So we traveled to Mau. From there we went to Jain Omkareshwar. In Omkareshwar, there is a cantilever bridge. And we had to travel in the Narmada river to visit the temple. Narmada river, it was the water was so wild. There was a round boat. We traveled in a round boat. It was shaking like anything. Almost it was taking us up and down. We were so much worried whether we will reach safely or not. That was really exciting. Oh. That was really exciting one. And 2-3 times we touched nearer to Goa, but that is in the bucket list. And now recently, Dolly Madam had asked our seniors today to take us to some picnic spot, and Firoz has committed that he will take us to Goa. So let's see how it works out. Yes, everything can be done with everyone's support. South side, almost we covered many places, sir. Almost all temples. The Tanjore Brigadeshwara temple. Huge temple, right? That Rahul temples around Kumbakonam, Tanjore side, Mannargudi side, and all that. And this side, Delhi also, most of the places we covered. Very good. Then abroad means we travel to this one, Dubai, UAE, all 7 countries we traveled in UAE.
Sharjah, Ajman, all those places. That is very exciting. That Burj Khalifa at Dubai. That is really welcoming, welcoming visit. That was. It's very nice. In Abu Dhabi, we went to one what is that? Ferrari World. Ferrari World. That is awesome, sir. That was very nice. You can just enter and you will not know what is the time. Just enter. Likewise, that Abu Dhabi mosque also beautifully built, and that marble, the design in the marble, each one is a unique design. Lovely mosque. Till inside we could go. Beautiful, very vast mosque. We had to walk down inside, but they have made arrangement for seniors to go in a shorter way. All those facilities were there, but that was worth visiting in Abu Dhabi. And Dubai is excellent. Then we went to one Al-Ain beach in UAE. We went at night around 10 o'clock. We traveled from Sharjah to that place to see the beach. At around 1 o'clock, we must have reached there. But it was pitch dark in the beach. We can't see the water also anywhere. And it was like, it was looking like a forest only, as if we are entering into a forest. But after reaching there, you can see like chimney, we can spot out some of the lights here and there. But once we got closer to the place, so much of crowd, each one were having their own tent built up in the mud of the beach side, and the water was so lovely. It was really enjoyable. So that was very nice, enjoyable trip. Then we went to from Hyderabad to Bagdora we traveled, and Bagdora to Bhutan we traveled. Bhutan is a very lovely place and a happy place. All people in Bhutan are happy. Everybody will be happy, and you can never see anybody with a sad face or anything. Lovely place. And even the Buddhist mosque, everything is beautiful, engraved in the walls, the designs in the walls, everything is beautiful, really enjoyable. We went during December, so icefall was there. So everywhere you will see all pure white ice all over, covered with ice. Mountains were covered with ice only, fully ice. You can literally walk on the walk or sleep on the ice only. That way it was. That was lovely. That trip really we enjoyed for a week or so, for 4 or 5 days. We enjoyed in Bhutan. That is lovely. And of course, in India there are many places you can venture. Lovely places. So many bucket lists are there. It will keep on increasing. Yes. Even this side, Nainital side and all, I heard it's very nice. Yeah, beautiful place. Yeah. So sounds good. Kashmir. Then I want to visit Assam, Jaipur, Wagah border, all those places. All those are beautiful places. I think all are worth visiting. It seems. That's it. Thank you, Jayaji. Very nice. So now we move to Satyanarayan ji. Kindly unmute. Sir, good evening to everybody. Very good evening, sir. So actually, the traveling is really enjoyable irrespective of places, because every places has got its own beauty to enjoy, whether it is in India or it is abroad. Because when I was in service, I have seen entire this thing India, north, south, east, west, everything. But generally, when I go to vacation, I would go with the family only. And even in our apartment, we have formed a senior citizen group
So every month we used to enjoy the trip for somewhere nearby sightseeing, etc. Okay. And every month also we used to celebrate somebody's birthday, somebody's marriage anniversaries. Okay, and just we used to sit. We have formed one Sangeet group within that senior citizens. Okay, so we used to enjoy those things. But basically, when we talk about the vacations and the vacations experiences, okay. So when you are on duty and you are on a tour to some other places, that enjoy is totally different. But when you enjoy with the family with to certain on vacations to certain places, that enjoy is totally to the unimaginable. And particularly with the children's when they are very young at just a growing age at that time. I have seen almost all when I was young. During every year, we used to visit the south place also because my maternal uncle was belongs from the Karur side, Okay. and my mother also from the Odamalapet sides. So every week, my father came over to this place in 1928 to the central part of the India. Since 1928, we are in India only. So from Nagpur, every year we used to go to south when my father was on this in service. So we used to enjoy go to Karur because it was a very near Karur. One Rajapuram village is there. Uh-huh. Rajapuram village is on the river bank, Amravati river bank. Uh-huh. So at that time, the only route was through Arvakurchi. We used to go to Arvakurchi, and from Arvakurchi, we used to hire that bullock cart. And between Rajapuram and Arvakurchi, there was a Amravati village, and that the river we have to cross that river. There was no bridge. There Oh. was no bridge. So from Arvakurchi, we used to hire the bullock carts. From Arvakurchi to Rajapuram, it is around 3 kilometers distance. And after that, we have to cross that river. There is no bridge. So wade So through the what we water. used to do, we used to get down from that bullock cart, and we used to. It was almost on a knee deep water at that time, knee deep water. So we used to just push that bullock cart, and that this thing that one man was taking that Jatwar and starts this thing moving forward. So likewise, we used to cross that river, and we used to enjoy the childhood. Now after that, when we have grown up, I have visited almost on many places, Gujarat, Jaipur, Delhi, and so many places. And even I have visited Canada and US because my son is in Canada near the Windsor, and my daughter was working in the US at that time before marriage in New Jersey. So I had been to that places also. The major the differences between what we are traveling for is to judge the culture, the attitudes, the behavior, the leniency towards the humanity. That only we can find the major difference wherever we are traveling. And noting that particular behavior, the attitudes, and the leniency towards the humanity, the maximum thing we can learn from India also, we can learn from the foreigners also. Yes. So that's a difference. Everybody has got plus or minus these things, but whatever the plus point is, that only we have to consider that one, but that we have to take out that one. Once I had been to Canada, in first time I went in 2014. So I visited the Toronto also. I had gone to that Niagara Falls also, and in the United States, almost I covered 50% of the United States from your New York to your Washington D.C. and Philadelphia, Maryland, and North Carolina. Every part I visited everything. But the basic things where I'm coming to highlights the main shortest points are that when I was in Canada in 2014. अभी नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जैसे मार्केट में कुछ सामान लेकर चले जाते हैं, वापस आते हैं. अच्छा, दूसरा कनाडा में क्या होता है, देयर इज नो एनी फेंसिंग इन एनी हाउस. जैसे अपना इंडिया में हर घर में फेंसिंग होता है, कनाडा में फेंसिंग कहीं नहीं होता, एवरीथिंग इज ओपन. तो आई वेंट टू परचेस सम ग्रोसरी टू नियर बाय शॉप. जब मैं वापस आ रहा था, सडनली इट वाज स्टार्टेड रेनिंग.
suddenly it was started raining. What in India we do, we take shelters in the neighborhood. उनके पोर्च पे चले गए, उनके पास शेड में जाके खड़े हो जाते हैं. तो हमने भी फर्स्ट टाइम कनाडा गया तो आई जस्ट स्टार्टेड टू एंटर द वन ऑफ द पोर्च, जहाँ पर मतलब फेंसिंग नहीं है. मैं एक पोर्च के नीचे में खड़ा हो गया. One lady was just seeing through that window and she was ऐसा देखती थी, फिर बाद में चले जाती, देखती थी, बाद में चले जाती. आई कुड नॉट एबल टू guess what she was doing for that. तो 2-3 दफा देखी. then she asked me, why are you standing here? मतलब madam, it is heavily raining, so I just taken the shelter. No, you can't stay here, just leave this place. बाद में बरसात स्टॉप हो गया. I went back to my residence. When I talking to my son, बोले पापा आप वहाँ पर खड़े नहीं रहना, दिस इज नॉट इंडिया. कम से कम आपका किस्मत अच्छा था. शी हैज नॉट डायल्ड योर 108. शी हैज नॉट डायल्ड 108, क्योंकि नॉर्मली कोई अननोन पर्सन वहाँ खड़ा रहता है, encroachment they don't speak to that stranger, they direct dial to the 109 and they call police and police comes and takes that person's away. तो बोले पापा आप लकी हैं, वो उसने 109 को कॉल नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर किसी के पोर्च में खड़ा नहीं, आपको भले गीला हो जाए लेकिन यू हैव टू कम डाउन. तो वो एक एक्सपीरियंस था. दूसरा एक्सपीरियंस कैसा था कि कैसे जैसे अपने को छींक आ जाती है बिकॉज ऑफ सर्टेन एलर्जी समथिंग. तो हमने जैसे छींक दिया, तो वहाँ के जो नेटिव प्लेस वाले जो वहाँ पे हैं, तो वो लोग क्या करता है, गॉड ब्लेस यू करके बोलता है. ठीक है. तो ये जो पर्टिकुलर जो एक छोटे जो एक जेस्चर, जो स्मॉल जेस्चर जो है, दीज आर द थिंग्स विच वी कैन टेक फॉर आवर दिस थिंग हैबिट्स. हम लोग क्या बोलते हैं, चीख रहा है, थोड़ा सा अलग खड़े रहो यार, क्या चीख रहा है इधर में. तो ये सर्टेन पार्ट जो होती है, किसी को बोले गॉड ब्लेस यू, irrespective they are unknown person to you, but irrespective of that one they say God bless you करके बोलता है. तो ऐसे हम लोग देखा है, हम लोग we had been to this thing North Korea also, we stayed there in hotel. $100 per day का था वहाँ पर स्टे. वहाँ क्या, वहाँ के जो मतलब क्या होता है, एक हॉस्पिटल जो होती है, that is totally different irrespective of the category of the persons, whether he's a rich person or he's not a rich person. Irrespective of that one, they give the priority to the humanity. एक दफा ऐसे हो गया था, when I'd been to Canada, from Windsor to Montreal, we went by road. And on the way we have visited Toronto and that Ottawa, everything. So one night we stayed Ottawa, then from there we took the journey and we went to this thing Montreal. Montreal से हम लोग जब रिटर्न आ रहा था, तो I was on the driving seat. वहाँ पर कैसा होता है, वहाँ पर कैसा, जैसे अपने इंडिया में we takes on the left side, we keeps on the left side, वो लोग राइट साइड में गाड़ी चलाते हैं. ठीक है. तो I was driving on the this thing right side. और वहाँ पर कैसा होता है, जिनको ओवरटेक करना है वो लोग लेफ्ट से ओवरटेक करते हैं, जिनको एकदम फास्ट जाना पड़ता है. ठीक है. तो ऐसा लेन चेंज होता रहता था. सडनली क्या होता है, आई वाज मेंटेनिंग स्लो एंड फास्ट. डिफरेंट जोन में देयर आर डिफरेंट स्पीड लिमिट्स आते हैं. राइट. वो स्पीड लिमिट्स को यू शुड नॉट क्रॉस. 10% प्लस और माइनस यू कैन मेंटेन दैट स्पीड. वो स्पीड से अगर आप वेरी कर लिया है, देन यू कैन बी चैलेंजर इमीडिएटली. आपको स्पॉट में कोई पुलिस वैन दिखेगा नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा. बट व्हेन इंसिडेंट्स अकर्स देयर, सडनली एवरीबody appears there within no time. ठीक है. The speed guns हमने there. किया तो There are speed guns at some places and they are वो रहता है. immediately they come to know यार certain incidents हो गया, suddenly they comes into the picture. तो मैं गया तो सडनली जब मेरे को स्पीड पकड़ा था, जस्ट रेज माय स्पीड फ्रॉम 60 to 90 स्पीड. जाने के बाद में इन द मीन टाइम मेरे को राइट साइड से सडनली कोई इंडियन, इट वाज सर्टेन दैट कैनेडियन पर्संस, दे ओवरटेक मी. तो सडनली उन लोगों ने मुझे देखा नहीं, मैंने उनको देखा नहीं. सडनली मैं उनको पीछे से हिट कर दिया एट द स्पीड ऑफ 100 माइल्स पर आवर. उनको हिट कर दिया मैंने. तो मैं जब ड्राइविंग सीट पे बैठा था,
वो जो इम्पैक्ट हुआ था, वो इम्पैक्ट से क्या होता है, जितने भी एयर बैग्स तो खुल गए अंदर में, खुलने के बाद ही पूरा अंदर पूरा धुआं हो गया और डोर पूरा लॉक हो गया अंदर। और जिसको हिट किया उसका डिक्की पूरा डैमेज हो गया पीछे से। लेकिन हुआ क्या इसमें, सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज एट दिस पॉइंट इज दैट कि वो जो सामने का जो गाड़ी का डिक्की हुआ है, वो बंदा उतर के नीचे है। आने के बाद में मेरा डोर पूरा लॉक हो गया था। वो खिड़की से ग्लास से पूछता है, सर आर यू सेफ? पहला क्वेश्चन उसको वही है, आर यू सेफ? तो मैंने बोला आई एम सेफ। तो इमीडिएटली वो टोइंग गाड़ी आ गया, पैरामिलिट्री अपना पैरामेडिकल्स आ गया, देन पुलिस आ गया, एवरीबडी केम विद इन 5 मिनट्स ऑन द हाईवे रोड फ्रॉम मॉन्ट्रियल ओटावा क्रॉस करा। ओटावा से आई वाज जस्ट कमिंग टुवर्ड्स द विंडसर बाय पासिंग टोरंटो। तो हाईवे में सडनली ऑल दैट पैरामेडिकल्स आ गया, पुलिस वाला आ गया, टोइंग वाला आ गया, एवरीबडी केम। सभी पूछते हैं, सर आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, यू आर सेफ? हेलो सेफ, ओके गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। उन्होंने मेरे को उतारा। उतारे के बाद में अगर वही केस अगर अपना इंडिया में रहता था, वही केस अगर अपने इंडिया में रहता था, तो पूरा मॉब जमा हो जाता था, पूरा मॉब जमा हो जाता था। भले ही अपने गलती अगर नहीं भी हो तो मॉब जमा को बोलते यार गाड़ी वाला है, इसका गलती है, तो वो ऐसा बोलता था अपने। क्योंकि ये इंसिडेंस मैंने इंडिया में भी, नागपुर में भी आई फेस दिस वन। मेरी छोटी बेटी का वेडिंग कार्ड इन्विटेशन देने के लिए आई वाज जस्ट गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन नागपुर इटसेल्फ। एक जगह चौक में था, चौक में गाड़ी डेड स्लो हो गया था। क्रॉस जंक्शन से राइट साइड से एक मोटरसाइकिल वाला आ गया, यस हिट मी एंड यस ऐसी मतलब घसीटते हुए कम से कम 100 मीटर्स दूर गए। दोनों बाइक वाले मेरे पास में आए, साहब आप कार से उतरिए, आपके कार के वजह से मेरे को डैश हो गया। मॉब पूरा जमा हो गया नागपुर के अंदर में, ठीक है। ये जो मतलब पब्लिक जो देख रही थी, पब्लिक ने आया, पब्लिक बोला कि मोटर वाले को बोला साहब गाड़ी तो इनकी खड़ी है, वो तो गाड़ी चली नहीं उनकी, डैश तो आपने मारा है, तो गलती आपकी है करके उल्टा उसको डांट के बेच दिया। दिस इज द कंडीशन ऑफ द इंडिया। अगर वो मॉब देखी नहीं होती तो दैट सिचुएशन वुड बीन डिफरेंट वे, करेक्ट, ठीक है। लेकिन ये जब मेरा कनाडा में हुआ, वो लोग बोलता है सर हमको क्या हुआ, आप इसको भूल जाइए, यू फॉरगेट दिस थिंग, बट वन थिंग इज दैट यू आर सेफ, दैट व्हाट वी नीड एंड वी एक्सपेक्ट दैट यू शुड रिकवर फास्ट। मेरे को थोड़ा पैर बगल में थोड़ा सा स्क्रैचेस आ गया था, वी ओनली प्रे दैट यू शुड रिकवर वेरी फास्ट। सेफ्टी वाज मोर इम्पोर्टेंट, पैरामाउंट। सेफ्टी। तो वहां पर क्या होता है कि ह्यूमन का जो लाइफ है, दे वैल्यू द ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ को, मुझे गाड़ी डैमेज हो चलता है, बोला साहब योर व्हीकल इज डैमेज, नो डोंट वरी, योर डीलर विल रिप्लेस विद अ न्यू वन, इंश्योरेंस हो जाएगा, तुरंत हो जाता है। और वहाँ का पुलिस भी इतना मतलब कोऑपरेटिव था। सब बोला आपका कितना का स्पीड था, 90 का स्पीड में चला था, आप मैं आपका ये भरता हूँ, आप ये मेंशन कीजिए, यू आर नॉट राइडिंग मोर देन 60। पुलिस वाला मेरे को बोलता है बिकॉज देर इज नो फेटल एक्सीडेंट इज देयर, सो आई जस्ट मेंशन एज अ फॉर्मेलिटी दैट यू आर राइडिंग मैक्सिमम 60। तो टोइंग करके बाद में टोइंग वाला लेके चला गया, देन आई कॉल्ड दैट रेंटेड व्हीकल, बिकॉज वहाँ पर ड्राइवर को नहीं मिलता, वी हैव टू कॉल द फॉर द रेंटेड व्हीकल एंड वी ओनली हैव टू ड्राइव दैट कार। करेक्ट। तो ये जो मेजर डिफरेंस जो आती है, ये हम लोग अपना इंडिया में भी देखते हैं, वी ऑब्जर्व इन द आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, देर आर सर्टन थिंग्स विच वी कैन लर्न फ्रॉम द प्लेसेस वेयर द पॉजिटिव थॉट्स आर देयर। ये थॉट्स हमको लेके चलना है। और इसके लिए क्या होता है, जैसा मेरा एक सजेशन है कि एवरी इंडियन और एनी इंडिविजुअल्स, they should visit to different places to know the culture, the habits, the their nature, attitudes, everything. ये देखने के लिए, सीखने के लिए any individual should go for certain vacations or some different places, unknown places, they should visit that one करके। This is my way of observation and this is my way of advice to every individual। क्योंकि And क्या even होता है food, इंडिया I में think you should try the local cuisine rather than do the normal. There's no point in going to north and eat idli and dosa, just like that.
लोकल यही है. cuisine, बट वहाँ पर भी ऑल इंडियन समिति, वहाँ पर भी सरवना भवन है. है सब है, I know. Everywhere that Sarvana is spread everywhere in the Yeah, globe. yeah. They are there. So this They are. was what I want to just highlight the things. Thank you. Excellent, excellent, Satyanarayanji. Thank you so much. You have Thank you. always been inspiring us. Now that I know you have an international driving license to go around, and Still, I'm having the international driving at this age. Also, I'm driving it. wonderful, wonderful. So thank you so much for your gyan that you have given all of us. We have at least 4 more people, but we are completely behind schedule, so I don't think we can cover the following people. That is Mukta ji, Sejal ji, Raman sir, who has been quiet today, and Aruna ji. So I think we will probably look at how it can be taken for the next round, because we are already too late for the evening. So maybe there is always a next time. So thank you so much for being there and sharing your travel logs. So excellent. Each one has given apna perspective, which I have thoroughly enjoyed, learned some things from all of you. So let's continue to do this, and we'll see you next time when there is an opportunity for us to meet.